Okay, so today we'll start with a topic, social media marketing. So basically, in the social media marketing, we are going to have 4 to 5 different platforms in which we are going to understand about Facebook, Instagram. That is, these are two platforms which are coming under the Meta. That is what you can say. The third platform that we are going to explore will be about the LinkedIn. Okay, of course, LinkedIn is very important again. And after that, we are going to have the X, that is Twitter, basically, but we can call it as X right now. And after that, also we are going to understand about the Snapchat. So Snapchat is also important. Why we are going to have, we are going to take a look at these 5 different modules or platforms only. The reason is very simple. Indian people are using these kind of 4 to 5 platforms a lot in all other different you can say social media platforms. That's why we are going to explore these things only. So there is one principle that we have to understand in the marketing, and that principle is that we have to do the advertisement where it is visible, right? Suppose there is a road, and you want to put that billboard or banner on that road, but if there is no traffic at all on that road, कुठेतरी वाळवंटात तो रस्ता आहे आणि तुम्हाला तिथं बिलबोर्ड तो प्लेस करायचा आहे, that is of no use ना. But wherever the road is there, जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है, right, वहां पे we can put the place the board जहाँ पे हमें ज्यादा visibility मिले. In that same principle, if you are understanding about, so India में Facebook, Instagram is most visible places for the social media marketing. Then the third comes as a LinkedIn. So as a professional person, LinkedIn is again very important. And after that, you can say Snapchat and X, that means Twitter. So that is also there. I would like to tell you one another thing, guys. What happened with me? That my LinkedIn profile is very strong. That's why people do connect with me via LinkedIn. So basically, I got the connect of the NMMS with the same, and the NMMS people have offered me the one subject for the second semester as well, because उनका second semester का preparation भी चालू हो चुका है due to the LinkedIn only. So the person who was actually looking at my LinkedIn profile, she said that whatever people I'm following, those people are following to you, right? इसका मतलब कि वो जो लेडी है, वो जिनको फॉलो करती है, वो लोग मुझे लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करते हैं. That's why she said I was very impressed with your profile and all. So we have decided that okay, there are 6 faculties basically for the first semester, and for the second semester, what they have done is that they are going to eliminate 3 faculties, and they are going to insert their inside faculties. जो NMMS के अपने जो full time faculties है ना, they are going to get those 3 faculties on the board, right? So they're going to eliminate. They already decided that one subject you're going to take. I said, okay, I'll convert it. So that is also there. And another thing that I got a call the day before yesterday from one company. I don't know the name of that company itself. I was in a hurry actually. So he directly said that would like to take you on board for a 1 day session, right? So that company is an export import company, and that company is from South basically, right? So they said that we're going to have a session on upcoming Saturday. So you have to conduct it. I said, okay, we'll do that. So why these kind of things are happening? The only thing is LinkedIn. Because if you are not there on LinkedIn, basically I think all people are here, the business people only. I think तू पण पुढे जाऊन काहीतरी त्यामध्ये चालू करशील, किंवा यू ऑल्सो है ना. आपको मराठी समझ में आता है? मतलब मैं अगर मराठी में बात करूंगा तो चलेगा ना? हाँ, ग्रेट. सो मतलब ये ऐसा होता है, मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर कंफर्टेबल इंग्लिश एज वेल ना? यस, चलेगा ना? हाँ. So basically, you are going to have your own kind of businesses down the line. So we have to understand the importance of the LinkedIn, and that is very important thing again to understand. Okay. So now after this, we are going to understand about X and Snapchat, as I said. But right now we have to start with the social media marketing. In that means, we are going to start about the Facebook and Instagram, right? So basically, these 2 platforms are there. Why we have to start with these 2 platforms? The reason is very simple. If you are understanding these 2 platforms in a proper way, you can say 60 to 70% of the entire digital marketing you can understand with understanding these 2 platforms itself. क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया, तो it will be very easy for all of you to understand all other platforms as well. Okay, and let me give you the reason as well. So whenever we are going to create the advertisements on any platform, ये Google हो, LinkedIn हो, Facebook हो, Instagram हो, X हो, Snapchat हो, जब हम वहां पे जाके अपना एडवर्टाइजमेंट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, at that time we have to do some settings, right? So what are the settings that we are going to do? Setting like
हमें ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, एंड एडवर्टाइजमेंट रन करना है तो हमें ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा. सो इन द ऑडियंस वी हैव टू सेट लोकेशन. ऑडियंस को टारगेट करना है कौन से लोकेशन, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, ऑल वर्ल्ड, कहाँ पे एड, कहाँ पे दिखाना है, उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए. मतलब ऑडियंस को एड दिखाना है, ओके, बट एज ग्रुप क्या होना चाहिए. द थर्ड विल बी जेंडर, राइट. द फोर्थ विल बी लैंग्वेज, and so on. So if you are understanding the logic, okay, let me tell you the important point is that, just a minute. Yeah. So let me tell you one important point. The important point is that what we have to understand, that whenever we are going to learn the social media marketing or any other thing, we have to understand the logic. Okay. So these are just the platforms, just the tools through which we are going to create the advertisements. But the point is that what we need to understand is that we need to understand the logic. That means if I want to create the advertisement for my own brand, which objective should I choose? Objective now we are going to understand, of course. But कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है? अभी मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो ऑडियंस होने वाला है, तो मुझे किसको ऐड दिखाना है? So now suppose he's there. Ashish is there. Okay. Now Ashish wants to target the people who are into the business only, because he is a manufacturer of the uniforms, right? So he want to target those people only who are decision makers. Now he need to understand first of all which platform should he choose to target the people. That is number one. And then in that particular platform, on that particular platform, how he can target the people. That is second point. So if I'm asking that he should go with the platform LinkedIn first of all, because all the decision makers are there, and literally he can get a lot of business on the LinkedIn as well. Okay, so that is the important point. And the one, as I always said, what benefit he's having, what the USP is having, he the manufacturer itself. So manufacturer ka benefit hota, he can work on the cost, which is very important element in the market right now. So he can play very well on the cost things, right? And if the bulk order all he is getting, this will be a great opportunity for him. So that is what we have to understand. Okay, now I am actually watching the continuous advertisements on the Facebook about the school uniforms and all, because on that day I searched the school uniform on my Facebook profile. So right now I'm getting continuous advertisement for school uniform only. What is the logic? The reason is that I searched that, so Facebook captured my interest, and now it is showing me the same advertisement again and again. Right now, on that day I searched just to show you how it works and all, right? But right now it is showing me the continuous advertisement in which I am not having the requirement basically. So basically that is what we have to understand. So we have to clear with the logic, and if we are clearing with the logic, it will be very easy for all of us to create the advertisements on these platforms. Is that clear? Now we have to start with the Facebook and Instagram. So if you want to start with the Facebook and Instagram, first of all, we have to understand what are the requirements. Because if we cannot fulfill the requirements, it will be difficult for us to create the advertisements, right? So requirement क्या होता है, मतलब कि अगर मान के चलो आपको कहाँ पे घूमने जाना है ना, आपको ट्रेकिंग के लिए जाना है. ट्रेकिंग के लिए जाने के लिए आप, हाँ, पहले रात को आप सोचते कि कल ट्रेकिंग जाना है, कल उठते निकल जाते हैं, ऐसा होता है क्या? इफ यू आर गोइंग फॉर द ट्रेकिंग, यू हैव टू मेक द प्रिपरेशन. जो रिक्वायरमेंट्स है, राइट, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद पूरा रेडी होके आप ट्रेकिंग के लिए जाएंगे. आपका बैग होगा, उसमें कुछ खाने के लिए होगा, चॉकलेट बार जो कुछ भी होगा, पानी होना चाहिए, राइट, आपके शूज वैसे होना चाहिए. ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट जो है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करके ही आप आगे जाएंगे. दैट टाइम यू आर सेफ. एम आई राइट? So on the same basis, whenever we are going to create any sort of advertisement on any sort of platform, we have to understand the requirements should be fulfilled properly. So it will be easy for us to create the advertisements or not, right? So what we need to understand is that if I want to create the advertisements on the Facebook plus Instagram, what are the requirements? Okay, so requirement number one is, of course, you should have a Facebook profile. Now you can ask, sir, ये क्या basic चीज बता रहे हो आप? Facebook profile तो सबका होता है ना? No, Facebook profile सबका नहीं होता है. And how I can tell you that? See, whenever I go to the colleges,
for any sort of session and all, right? So I usually ask, how many of you are having the accounts on the Facebook? तो अगर 200 लोग सामने बैठे तो 4-5 हाथ ही ऊपर होते हैं. That is a behavioral changes happening in the market, in the audiences. And if I'm asking them, how many of you are there on the Instagram as well as Snapchat, raise your both hands. Everybody is raising their hands. So this is what the experience of mine is. So now the new generation people, right, Gen Z जिसको हम बोलते हैं, they are not there on the Facebook. They are there on the Instagram and the Snapchat only, maximum number of times. And few of them are having the accounts on the Facebook. So that's why requirement number 1 is Facebook. Do you have the accounts on the Facebook? Pratibha, do you have Yes, I do have. Great. I do have. Now, the point is that is the requirement number 1. If you are not having, okay, or if you are having a chance to say this to someone, without Facebook account, you cannot run the advertisement. That's a true thing. But again, one thing that we have to understand, when we are going to create a new account on the Facebook to create the advertisements, after creation of the your account, do not start the advertisement quickly, right? So the point is that the logic is that when you are going to create the account, that account is new. That means you are new to the Facebook. And on the same day or after some time only, you are starting running the advertisement. Facebook will count it as a spam activity and it will ban your ad account. So you won't be able to create the account again, ad again from that account. That will be very difficult for you. So try to understand. So what we need to do is that whenever we are creating a new account, we have to use that account on a regular basis for, let's suppose, 8 days, 7 days, 7 days and all. Send the request to the friends, accept the request, post something, like on that, comment on that, share on that. Everything that is what we have to do. And then directly what you have to do, you can start the advertisement. So Facebook profile is the option number 1, requirement number 1. Requirement number 2 is very simple again. You should have a Facebook page, right? So now, do you know the difference between Facebook profile and page? कौन बता सकता है? Yes, Akshata, can you tell difference between? What is the difference? Yes, anyone else? Facebook page is your business page where you can sell or show your business products. And Facebook profile is your personal profile. Correct. So what do you mean by the Facebook profile or Facebook account? That means a human can have a profile. Okay, I am the human, I can have the profile. But Rishi Pandit Digital School is my entity, is my company. So that entity, that company cannot have the profile. That entity, that company should have the page only. Is that clear? Now, any kind of business, any kind of politician, they can have the Facebook profile as well and as a page as well. So I think you know that, any kind of politician, they can have his own profile and with the same name, he can have his own page as well. At the page, he is a politician, he is an entity, and his personal life is different. Are you getting my point? So this is what we have to understand. So that is also the required thing number 2. And the required requirement number 3 is your Instagram account, or we can call it as a handle, right? Because if you want to show your advertisements on the Instagram, you should have the Instagram profile. Without that, you cannot run the advertisements over there. Is that clear? So that is your requirement number 3. Now, on the Instagram, we need to understand again one important point, that Instagram, it's not like Facebook. यहाँ पे Facebook में क्या हो रहा है कि प्रोफाइल अलग है और उसी प्रोफाइल को यूज करके मैं पेज बना रहा हूँ. इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे नहीं है. इंस्टाग्राम के ऊपर आपको अलग अलग ही प्रोफाइल बनाना पड़ेगा. तो जैसे मेरा ऋषि पंडित का मेरा एक पर्सनल हैंडल है और ऋषि पंडित डिजिटल स्कूल का एक दूसरा अकाउंट है. सो दोनों यहाँ पे अकाउंट है. देयर इज नो पेज लाइक थिंग ऑन द इंस्टाग्राम, राइट? सो दैट इज व्हाट. सो in summary, there are 3 requirements. We should have a Facebook profile, a Facebook page, and the third is Instagram. So these 3 things that we should have to create the advertisements on the Facebook. That means Meta platform. Okay. Now it's very easy. Try to understand. Let me explain you. It's very easy. If you are thinking there's a difficulty, there is something I cannot do
will I be able to run the advertisements? Will I be able to get the results and all? So you don't worry. So these things are very easy things. The main point is that the main problem is that we just don't know how to do that. You know, when I started my digital marketing journey in the college days, at that time, I started my first blog, right? And it took me 6 long months to launch my blog number one. At that moment, I was new to that particular field. There were no one to tell me how to do that and all. There were no that much resources. अगर आप अभी YouTube के ऊपर जाके search करेंगे, you get thousands of videos. And literally, I mean, thousands of videos you get it. How to create this and how to create that in the digital marketing. In those days, there were no like that. There were no resources on the blogging as well. So by reading, I can create the blog and all. So there was one video I still remember. That video was entire video, and I was keep watching that video again and again to create the website or blog of myself. But right now, if I'm telling you to create the website or blog, I can literally create a website just in 20 to 30 minutes, and I mean it. Why? Because I was not knowing to those things back in those days, but right now I know everything. So that's why I would be able to tell you. So there is just a thin line in between the digital marketer hai or digital marketing nahi hai, and the thin line is called as your knowledge, right? You're knowing that particular thing. Do you know that or not? So that's the only thing that we have to understand. Otherwise, everything is easy. So you don't even think that this is difficult. Will I be able to do that or not? Now, let me tell you another thing as well. See, what is going to happen? That suppose there is one project, okay? So there is one builder. That builder is having the 1 BHK, 2 BHK products. Now he want to sell those products. Now, if you are also the channel partner पता है सबको? पता है? Do you know the channel partner? जो उसके साथ collaboration में काम करके builder की जो flat से बेच के देगा. So if you are a channel partner and I am also the channel partner, we both are doing the lead generation campaign on the Facebook, Instagram. So the results we are going to get, because we are going to have the same resources, same building है, same pricing है, same सब है, same tool भी है मेरे पास, Facebook, Instagram, same location है, सब same. Is that right? So there is no unfair condition. दोनों के लिए condition same है ना, but still whatever results that you are going to get will be different, and whatever results I am going to get will be different, right? So what's the difference then? Right? The target भी same रहेगा ना. I mean to say, जो आप टारगेटिंग करेंगे, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, वही ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है. आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, ऐसे तो नहीं ना. सो आप फिर भी आपके रिजल्ट जो आएंगे वो अलग रहेंगे और मेरे रिजल्ट अलग आएंगे. हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट मिले, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट? आपने 5 दिन में 100 लीड जनरेट करके 5 लोग को क्लोज किया. मैंने 5 दिन में 200 लीड जनरेट किए, लेकिन एक भी क्लोज नहीं हुआ. बिकॉज हियर द रिजल्ट, हाउ यू गोइंग टू मेजर द रिजल्ट? ऑन द नंबर ऑफ सेल ना, कितने आप फ्लैट सेल कर रहे हैं. So there is a difference. The difference that if you want to measure the difference is there only of the strategy, planning and execution. Because everything is same, then what is the difference? The way I want to strategize the marketing campaign will be different. The way you're going to strategize the campaign will be different, and the way you're going to execute the campaign will be different. Try to understand these things. So even everybody is having the same resources on the Facebook and Instagram. What we have to understand कि हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करके उसको कैसे how we can get the results. So basically that is what we have to understand, and this is the only thing that you also have to do. जब हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अभी हमें ये समझना जरूरी है कि मेरे पास सब चीजें सेम है, तो मुझे रिजल्ट्स, ऑप्टिमम रिजल्ट्स कैसे लेके आना है. So basically that is what we have to understand, and for that matter we should have the complete knowledge of these particular platforms. Now all of you are the business person only, right? So if you're going to have the communication with a freelancing client maybe, or you people are starting the running advertisement for your own brand only, are you getting my point? So the point is that if you are understanding each and everything properly, it will be easy for you to run the advertisement. So guys, why I'm explaining all this to you, there is a reason behind this.
And the reason is that whatever things that I'm going to teach you here, you have to practice it, of course, no doubt in that. But apart from that as well, you have to explore the more things. Now, what do you mean by explore? मैंने आपको ये 4 points बताया. See, 4 points बताया मैं तो उतना ही खत्म नहीं होता है, वहां से चालू होता है. So whenever you be having a time on your mobile phone, on your laptop, या वैसे बैठे वहां पे जाके क्लिक करके देखना है आपको, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है. So what you're going to do is that you will be having that deep knowledge one by one, and then whenever you're sitting in front of client for the interview and all, you will be able to speak about that. एंड आपको पता लगेगा कि यार इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. लेकिन वो क्या करना पड़ेगा ये समझने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं करके. मुझे क्या करना है, मुझे पुणे जाना है, लेकिन मुझे रोड ही पता नहीं है. जाना तो है. अगर मुझे क्लाइंट बोलता है चलो पुणे, राइट, मैं बोला हाँ, लेकिन रोड ही नहीं पता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर कोई क्लाइंट बोलता है लीड जनरेशन करो, आप बोलेंगे हाँ, लेकिन कैसे करना पता ही नहीं. तो यू शुड नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट लिटिल थिंग्स आपने कभी आज तक एक्सप्लोर नहीं की. आई बेट ऑन दैट, राइट. कि हम क्या करते हैं, विल गो टू द फेसबुक ओनली, विल गो टू द इंस्टाग्राम ओनली, विल स्क्रॉल द थिंग्स ओनली, राइट. किसी को लाइक करेंगे, किसी को कमेंट करेंगे, किसी को शेयर करेंगे, कोई रील शेयर करेंगे, है ना. So instead of that, guys, from today onwards, why I am telling you all this pitch, there is a reason, because I want to change your approach towards the digital marketing. Try to understand. Okay, so we are the digital marketing specialists. We are going to be the specialists right now. So what approach we should have? The approach is very simple. We should have the approach of understanding the digital world in the technical way, not in the user prospects. We have to understand the digital world in the creator prospects. Are you getting my point? So whenever what I do is that I also explore things. No? I also have to be updated. Okay, I also need my own specific time, है ना. So मैं भी टाइम पास करता हूँ, लेकिन उस टाइम पास में भी थोड़ा सा टेक्निकलिटी होता है. आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर वो पर्टिकुलर रील है तो उस रील को लाइक्स कितने हैं, उस रील को कमेंट्स कितने हैं, कितने लोगों ने उसको शेयर किया है ना, उसके व्यूज कितने हैं. तो इतने व्यूज है तो वो व्यूज क्यों है. तो अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है उल्टा सीधा तो मैं जाके डायरेक्ट उसका रिसर्च करता हूँ. हैव यू सीन दोस काइंड ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम जहां पे उसके लाइक्स कम होते हैं लेकिन शेयर ज्यादा होते हैं. कभी देखा है ऐसा आपने, राइट. व्हाई दिस इज सो, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट, राइट. सो द रीजन इज वेरी सिंपल, दैट द कंटेंट in that particular reel, everybody is relating that content and everybody is willing to share that particular content with someone. वो लाइक नहीं करेंगे लेकिन वो रिलेट कर पा रहे हैं, दूसरे को शेयर करेंगे, है ना. So the point is that कि those kind of call to actions those content are having, and that's why this is happening. So you today also, from today itself, you have to do one thing. You have to start doing this particular practice, that whenever you will go on the social media platforms, do not do the time pass. And even if you're doing the time pass, do that time pass in such a way that you should get something. You never know from which kind of content, what kind of idea that you will get, and you can implement that idea as well. Not necessarily we are going to copy the same idea, but we can improvise that. But you can at least get that idea. Get my point? So that is what you have to understand. You have to save the content and all, and whatever आपने सेव करके उसको बाद में भी जाके देखना होता है. खुद को पूछो, जितने भी रील आपने सेव करके रखे हैं, कितने रील आपने फिर से जाके देखे, पूछो खुद को. हम क्या करते हैं, यार ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने सेव करके रख सकते, बाद में उसको ध्यान ही नहीं देते. इतना इंफॉर्मेशन फ्लो हो चुका है, इतना हो रहा है और वो बढ़ने वाला है. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. जो कुछ भी आपके पास डेटा है, कंटेंट है, इतना फ्लो, इतना इसका बढ़ गया, एंडलेस स्क्रॉलिंग हो चुका है. आप 24 घंटे 28 घंटे 48 आवर्स 72 आवर्स कंटिन्यूस भी बैठेंगे ना, तभी स्कूल खत्म नहीं होगा, राइट और रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि we are having the limited time, but data have the endless time, content is having the endless time, right. And that's what we have to understand. Okay, now let me tell you the second point. There is a science also that we have to understand. Okay,
ये साइंस को खत्म करके विल गो फॉर द प्रैक्टिकल, बिकॉज आई थिंक दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट इज साइंस? आप बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग में साइंस का क्या क्या रिलेशन है सर? मैं बोलता हूँ साइंस भी इसमें है, बायोलॉजी भी इसमें है. आप लोग बायोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग में? यस. लेट मी टेल यू. सी, दे आर द अल्कोहल एडिक्टेड पीपल, है ना? दे आर द cigarette addicted people. They keeps consuming the alcohol, they keeps having the cigarettes and all, right? और क्या बोलते हैं कि ये किक मिलता है ना? क्यों दारू पी रहा है, क्यों अल्कोहल ले रहा है? किक मिलता है, अच्छा लगता है. यू नो व्हाट आई मीन बाय अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मतलब क्या होता है? आपको भी देखो ना, आप जब घर में जाएंगे, आपका जो फेवरेट फूड है वो अगर मम्मी ने बनाया है तो आपका अच्छा लगता है. आप खुश होते हैं ना? खुश होते कि नहीं? अगर आप कहाँ पे घूमने जा रहे हो और आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है, आपको अच्छा लगता है. अच्छा लगता है मतलब क्या होता है? एक्चुअल क्या होता है? देयर इज अ बायोलॉजिकल रीजन फॉर दैट, है ना? कभी कभी सैड लगता है, देयर इज अ बायोलॉजिकल रीजन फॉर दैट. सो अच्छा लगता है, इसका रीजन होता है वन केमिकल दैट कीप्स सिक्रेटिंग इन योर ब्रेन, एंड दैट नेम ऑफ द केमिकल इज अ डोपामिन. सुना है कभी इसके बारे में? राइट. सो डोपामिन जो होता है, डोपामिन हमारे ब्रेन में सिक्रेट होता है, दैट्स व्हाई हमें अच्छा लगता है ना? हम किसी जो हमें जो हम जिसको भी हमारे घर में अच्छा है ना, जिसको भी हम चाहते हैं ना, अगर हम उसको पर्सन को देखते हैं हमें अच्छा लगता है. अल्कोहल वाले को अगर ले ली रात को तो उसको अच्छा लगता है. तो द पॉइंट इज दैट उसके ब्रेन में डोपामिन सिक्रेट होता है, एंड दैट्स व्हाई ही और शी फील्स गुड. नाउ अभी इसका और इसका क्या कनेक्शन, डिजिटल मार्केटिंग इसका क्या कनेक्शन है? लिसन, अज्यूम you went to a Goa with friends, you went to a Mahabaleshwar with a friend, an example, right? There's a very beautiful, everything over there. You clicked few pictures and उसमें से भी हम ढूंढते कि इसमें से अच्छा कौन सा है, and you posted that सबसे अच्छा वाला पिक जो आपको अच्छा लगता है on the Instagram, right? Suppose सुबह आपने पोस्ट किया है, शाम तक उस पर्टिकुलर फोटो को 2 ही लाइक्स आए. आपका एक्सपेक्टेशन सब लोग देखेंगे, सब लोग समझेंगे यार ये मैं गोवा आया हूँ, एंड मैं महाबलेश्वर आया हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन 2 ही लाइक. सोचने में भी कैसा लगता है ना? सो द पॉइंट इज दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल इन दैट केस, राइट? यू फील दैट यार ऐसे कैसे हुआ, यू फील सैड, राइट? नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, सपोज आपने फोटो पोस्ट किया, आपने सेल्फी पोस्ट किया, राइट? यू आर एक्सपेक्टिंग 50-100 तो लाइक्स आएंगे. उस पर्टिकुलर फोटो के ऊपर आए 500 लाइक्स और 100 लोगों ने कमेंट किया. सोच के भी अच्छा लग रहा है ना? नाउ द डोपामिन इज सिक्रेटिंग ऑन योर ब्रेन. You have to understand, and same thing happens here in the social media marketing, in the other things as well, right? So whenever you are searching something, right, that means you are interested in that. So these different algorithms of different platforms will show you that kind of content only. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि यू थॉट समथिंग कि यार इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, चलो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं. तो हम क्या करते हैं कि उस चीज को ढूंढने के लिए हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, लेकिन यूट्यूब में हमें कुछ अलग ही दिखता है वहां पे. तो हम जो हम सर्च करना चाहते थे हम उसको भूल जाते हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर क्लिक करके हम वही चालू करते हैं. कभी हुआ है आपके साथ ऐसे? मेरे साथ तो बहुत बार होता है. सो व्हाई दिस हैपनिंग गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि उस पर्टिकुलर यूट्यूब को पता चल चुका है भाई तो किस में इंटरेस्टेड है, और हम जिस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं अगर वही कंटेंट हमें वहां पे दिखता है, राइट, तो ऑफ कोर्स हम वहां पे क्लिक करने के लिए मजबूर होते हैं. और हम वहां पे क्लिक करते हैं, कब क्लिक करते हैं, कब 20-15 मिनट चले जाते हैं, और बाद में ऐसा होता है कि यार मुझे ढूंढना क्या था यही भूल जाते हैं. ये होता है ना सबके साथ. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज द dopamine which is releasing on a brain, right? So whatever thing that you love, you like, if you're watching that thing in front of you, you cannot restrict yourself from doing the action towards that particular thing, right? आपको एक चीज बहुत अच्छी लगती है खाने में, मान के चलो गुलाब जामुन एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छे लगते है ना, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी है और गुलाब जामुन आपके सामने है, तो मन में क्या होता है सबसे पहले क्या खाना है ना? इट्स लाइक दैट ओनली.
right? So the point is that this is the important thing that we have to understand. So on the social media everything is free, है ना? फेसबुक यूज करने के लिए पैसा देता है कोई? इंस्टाग्राम यूज करने के लिए पैसा देता है कोई? यूट्यूब के लिए पैसा मांगता है आपको यूट्यूब? आप प्रीमियम वाले मांगते हैं ऐड नहीं देखने तो, लेकिन एज यूजुअल तो फ्री है वो. Try to understand that if something is free, then you are the product. Try to understand. Now, Facebook, मार्क जुकरबर्ग से के दिमाग से सोचो, अभी 2 मिनट के लिए मार्क जुकरबर्ग बनो खुद को, बोलो आप फेसबुक आपका है, खुद का कंपनी है. बोलो कि इंस्टाग्राम खुद का कंपनी है ना, खुद का कंपनी है ये मान के चलो. अभी उसके बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग जितना ज्यादा टाइम मेरे फेसबुक के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेंड करेंगे, उतनी ज्यादा बार मैं उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा. जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलेगा. मतलब आप मार्क जकरबर्ग, राइट? सो उसके लिए आप और आपका टाइम इज द प्रोडक्ट. फेसबुक इंस्टाग्राम तो है, दैट इज अ मीडियम टू रीच द प्रोडक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फेसबुक इंस्टाग्राम, that is a medium for the Mark Zuckerberg to reach the product. Your time is his product right now, and we are wasting the time. Is that true or false? Just ask yourself. And we are wasting the time, है ना? So कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम जब भी टाइम मिलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, अभी मैं 10 मिनट के लिए जाऊंगा बाहर, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? करने वाले मुझे पता है, लोग बोर होते हैं ना, सबसे पहले लोग मोबाइल निकालते हैं. सबसे पहले वाई? और सबसे पहले मोबाइल निकाल के एक तो व्हाट्सएप चालू करेंगे. व्हाट्सएप में अगर वो स्टेटस के यहाँ पे डॉट दिखेगा, और हम क्या करते हैं, मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को एक्वायर करने से पहले स्टेटस नहीं था. इट वाज जस्ट अ टूल टू कम्युनिकेट विद द पीपल, राइट? लेकिन अभी मार्क जकरबर्ग ने उसको भी एडिक्टेड बना दिया है. मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये बात को सोचो, आप बोलते हैं कि डेटा डेटा प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, ये बात आप करके देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? सपोज आप किसी दोस्त को, फ्रेंड को बहुत साल बाद मिले, राइट? जाते जाते मिल गए अचानक से, तो हम क्या करते हैं? पहले नंबर, हाँ कैसे है, क्या है, हाय बाय, कुठे रहते हैं, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. एंड देन व्हाट वी डू इज दैट, कैन वी एक्सचेंज द नंबर्स? तो उसको नंबर का, हाँ अभी सबसे पहले क्या, व्हाट्सएप के ऊपर हाई कर भाई, नंबर एक्सचेंज होते हैं, सब होते हैं, विल स्टार्ट चैटिंग विद दैट पर्टिकुलर फ्रेंड. अभी गाइस उसी फ्रेंड का जो फेसबुक प्रोफाइल है वो आपको फेसबुक में एज अ सजेस्टेड में दिखेगा. हाँ दिखता है सर. यस. इंस्टा में भी दिखेगा. तो फेसबुक और मेटा तो बोलता है व्हाट्सएप इज सिक्योर, डेटा यहाँ से वहां नहीं होता है. तो उनको पता कैसे चला भाई मैंने इसके साथ अभी अभी व्हाट्सएप पे कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, राइट? So that is the point we have to understand. So they are using these kind of data in a commercial way. क्यों? अभी देखो व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ, फेसबुक के ऊपर दिखा, वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर दिखा. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग him or her, whatever. Now the point is that कि now he or she is my friend ना, so of course whatever she is posting, I will go over there, I like it, I'll comment on that, मेरा टाइम वहां पे जा रहा है. So these are the algorithms that is designed in that way to keep you addicted, to keep you, you know, to increase your screen time, right? Because as a Mark Zuckerberg, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था, right? आप अगर ये सोचेंगे कि जितना लोग मेरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा मैं ऐड दिखा पाऊंगा और उतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे होगा, राइट? सो वी आर यूजिंग दैट मीडियम टू रीच द पीपल. सो वी हैव टू चेंज आवर माइंड फ्रॉम टुडे, उसको यूज कैसे करना है, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. सो आज से फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जाके टाइम पास करना बंद. टाइम पास करो, देखो एज ए ह्यूमन आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड यार, मुझे भी लगता है बोर हो रहा है, चलो थोड़ा सा जाके देखते. बट व्हेन आई गो देयर ना, कोई फनी वीडियो देख रहे हैं ऑल, आई ऑलवेज डू वन थिंग, यार उसने कंटेंट कैसे बनाया, कंटेंट को एंगेज रखने के लिए हुक कैसे बनाया, है ना?
and that is what we have to understand. Is that clear? So we can also do the same thing, and everything is content, guys. So some बोलते हैं ना, marketing के लिए you have to show yourself. You have to show your content and all. So that's why I came yesterday night very late, because after the session also we 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 we, we were there only just to create the content. Photos निकाले, ये निकाले, वो निकाले. We have to, I have to show it ना, right? So that is very important thing that we have to understand. Okay, okay. Let me tell you one good news for all of you again. अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का याद है तो इसके लिए बता रहा हूँ that now our institute is onboarded with the Maharashtra government as well. Okay, so you people are going to get certificates from the Maharashtra government directly. So Maharashtra government and MCD, Maharashtra Center for Entrepreneurship Development, there's a one hand of Maharashtra government. So that is, they have onboarded us, right? So there's an examination that you have to give, and after that examination, you will get the certificate from the Maharashtra government directly. So that is also there. So basically, I was thinking yesterday about that only. So how I can promote this and all, because ultimately I have to promote that as well in the market and all. So I wanted those kind of shots and all that I wanted to show to the people. So I did the same thing. You know, I went on after the everything. I went to the dais. I went there. I clicked some photographs and all. So that is the content that I've got now. Right? So I can show that content to the people. Yeah, actually, I got the invited, and I clicked some pictures and all, which I can show to the people now. So this is what we have to understand. So the way you're going to create a content, that is going to make a difference. So try to understand, guys. One last point that I would like to mention here, and after that we'll go for the practicals. And the last point is that your content is king. Get my point? If you are creating a good, valuable content for the people, definitely you'll go high, right? But if you're not creating the content, if you're not creating the valuable content on, you are not going to get a proper attraction, eyeballs of the people. That is also what we have to understand. Okay, so always try to create a good content. Guys, ये पूरा गेम है ना कंटेंट का बन चुका है अभी. मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा गेम is all about the content, and I can give you the example as well, right? There are a lot of good restaurants, good hotels nearby you, a lot of good ना, उसका टेस्ट होगा बहुत अच्छा होता है. आपको पता है, जब कभी देखो ना एक होटल होता है, हमारा फैमिली होटल होता है ना. सोचो ना, आप किधर खाने के लिए जाना है, डिनर के लिए जाना, पूरे फैमिली को, सबसे पहले होटल कौन सा माइंड में? एक ही होता है, एक दो होते हैं. वहां पे भी आप सब लोग को पहचान दे, वो वेटर वगैरह सब हाँ आगे सर आगे वगैरह, ऐसा होता है कि नहीं? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दूसरा कोई होटल है, दूसरा कोई रेस्टोरेंट है जो नया नया खुला हुआ है ना, जिसने ओपनिंग के लिए क्या किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके आया. वो सेलिब्रिटीज ने वहां पे बाइट्स दिए. बाइट्स देने के बाद उन्होंने उनके स्टोरीज के ऊपर वो इनॉग्रेशन के फोटोज पोस्ट किए. एवरीथिंग इज सेट ना. उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में बात करें, इसके लिए आप जाके उसको वहां पे देखते हैं, है ना. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार वो नाम बन गया ना, तो हम वहां पे जाके कुछ भी खाने के लिए तैयार होते हैं, है ना. अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि जोशी वड़े वाले, पता है आप पुणे जाते हैं ना, पुणे सातारा पुणे जाते हैं, ये अलीबाग जाएंगे तो वहां पे भी एक फेमस नाम है ना, जोशी वड़े वाले. तो मैंने आई वॉज थिंकिंग ओनली कि यार इतना लोग बात करते, जाके देखते थे क्या है. मुझे नहीं अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा. आई डोंट नो आपके बारे में, बाकी लोग के लिए अच्छा होगा, दैट्स ओके, बट मुझे अच्छा नहीं लगा. सो क्यों? फिर भी वहां पे लोग आते जाते हैं, भीड़ रहती है. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ ब्रांड नाउ, right? So the way they created the content, the way they are showing themselves does matter a lot. होटल 7/12 पता है? होटल 7/12 सेम थिंग, उसका कंटेंट आके देखो, मतलब कि वो अलग लेवल के ऊपर खेल रहा है. Now there are a lot of good hotels ना in between, but still he is successful in short span of time. The reason is very simple, content. राइट. अगर कोई है ना, बोलते ग्रैंड मदर, आजी वगैरह,
अगर वो कोई उसको होटल में जाती है तो वो खुद बंदा उसको अलग वे से उठा के वगैरह लेके आता है, बिठाता है, खाना खिलाता है। और देखो ना, अगर वो किसी को खाना खिलाए ना तो उसके पीछे वो बंदा लगा ही रहता है। आप जब ये सोचना, हम जब उसको देख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो पीछे कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके सामने वो बंदा है, 24 घंटा उसके सामने रहता है, क्योंकि उसको कैप्चर करना है। और जो कैप्चर मोमेंट अच्छे अच्छे आते हैं उसको वो अच्छे से करके उसको डाल देते हैं, राइट। तो उसके लिए वो कंटेंट बनता है। आप सोचो ना कि मान लो आशीष को वहां पे कुछ दिखाना है, आशीष ये दिखाना चाहता है कि हमारा फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे चलता है। भाई तू जब तक किसी को सामने खड़ा नहीं करेगा शूट करने के लिए, तब तक तेरा कंटेंट बाहर कैसे आएगा। तो उसके पीछे भी प्रोडक्शन होता है पूरा, राइट। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा ऐसे ही होता है। कंटेंट है, दिखाना पड़ेगा। So that is what just I want to tell you. So in any sort of business, if you are not showing yourself in these days, you are losing a game. Try to understand, right? Someone may take over you, at some point of moment. Not take over, is overtake. Take over and overtake में difference है, right? So that is what we have to understand. So content बनाना शुरू करो. That is very important point that we have to understand, right? And that is a topic, that is a subject that I'm taking in the NMMS. Content creation and marketing. So we are in the process of content creation first, and then marketing. कैसे करें? Marketing के लिए tools है हमारे पास. Creation is very important. Creative process. That is what we have to understand. Okay. So that is the important thing that we have to do, and then we go for the next point. Okay. So समझ में आया? कोई doubts? पक्का? कोई बात को समझो ठीक से and start acting like that. So हाँ दिखता, हाँ जो दिखता है वही दिखता है। हाँ उसका अपना तबेजा में छोटा सा ही चाइनीज का बना, हाँ उसने जब खाकर दिखावा किया ना, हाँ तो अभी उसके दम पे उसने भी तबेजा बहुत बड़ा बनाया। अभी उसके 3 आउटलेट हो गए, एक बहरीन में हो रहा है, एक बॉम्बे हो रहा है, और एक अभी शिल्पाटा में एक्वेरियम का हो रहा है। हो ऍक्च्युअल मध्ये बसून ना पाण्यामध्ये तुम्हाला प्लॅटफॉर्म असणार, हाँ बाजूला मासे वगैरे असतात, त्याच्यामध्ये तो मोठा प्रोजेक्ट बनवतो शिल्पाटाला। क्या बात आणि तो बहरीनला पण एक है। रेस्टोरेंट का? हा, फक्त तुम्ही खारगाच्या दम वरती त्यांनी एवढं उचललं, आणि ते पण 4 वर्ष देखो हायवे ब्रेक होते। हे कुठेतरी ऐकलंय मी. अहो हे आपल्या खारघर ब्रिज क्रॉस केला, हा हा अच्छा हा ते ब्रिजला घेतलं. ओ त्याच्या बेस वरती त्यांनी एवढं उचललं। हा हा ते मोठं हॉटेल आहे पण ते. रेंटल आहे, 5 लाख रुपये रेंट आहे। अच्छा ते रेंटल आहे का? हा, आणि त्यांनी पूर्ण वरती रेंट फॉरेस्ट खाली लक्झरियस बनवलं, वरती रेंट फॉरेस्ट एवढं भारी। हो का? त्यावेळी त्या स्टार्टिंग करता ते लोकांनी म्हणजे भरपूर पैसे इकडे तिकडे हे करून घेतले, क्रेडिट होती, पण आज अशी झाली की त्याला फ्रँचायझी भेटते। तो हर 2 वर्षाला गाडी चेंज करतो, आणि ते पण डिस्कवर टाईप मोठा गाडी। क्या बात आहे. आणि तो हा एक ओनरच ते तलोच्या गावातलीच मॉमेडियन, कोकणी मॉमेडियन आहे. हो का? भरपूर म्हणजे त्या बेसवर तुम्ही उड्या मारतो। हा सही आहे ना, कॉन्टेंट आहे. ट्रेलरला पण तेच झालं। हा तुम्ही हाती काय म्हणलं, ब्रिजच्या इथे बाजूला आणि ते एकदम पॉज चकाचक. तेवढ्यासाठी लोक जातात, पण तुम्ही किचन भागात एवढं हा ना, ते बाहेरून पण दिसतं असं. लोक काय करतात की मला ही वस्तू 500 रुपये ह्या इकडे भेटेल दुकानात, मी तिकडे पण 500लाच भेटते, पण मला फोटोज क्लिक करायला भेटेल किंवा काय एक्स्ट्रा, त्याच्यासाठी लोक असतात। आणि एवढी गर्दी हा ऑलवेज. 10 लाख रुपये। बापरे, इंटरनल माहिती असतं. अपना और स्टूडेंट है राहुल दातकिले करके, तो उसका एक क्लाइंट है, मतलब वहाँ पे वो ज्वाइन हो चुका है। तो उसके क्लाइंट का पहले यहाँ पे घनसोली में ये था, क्या बोलते उसको, सलोन था। तो पार्टनरशिप में किया था उन्होंने। अभी क्या किया उसने उसने सानपाड़ा में 2 CR का कमर्शियल प्लेस लिया, 2 CR का कमर्शियल प्लेस डायरेक्ट, और उसमें मुझे लगता है कि उसने 1 CR सिर्फ इंटीरियर के डाले, सिर्फ इंटीरियर, और लग्जूरियस सलोन किया उसने। सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया था फॉर द इनॉग्रेशन। गणेश नाईक वगैरे सगळे आणि सेलिब्रिटीज पण आले होते. सो द पॉइंट इज दैट द वे दे आर क्रिएटिंग द कंटेंट इज अलग ही लेवल है, तो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे. एक टॅटू आर्टिस्ट अच्छा हाँ, तो महेश चव्हाण त्याच्यावरून पहिल्यांदा ते गणपतीवरून क्लॅशेस झाले. कशावर? गणपतीची त्यांनी केस बनवलेली आर्टिफिशियल, त्याच्यावर भांडण लागली मनसेची, आणि नंतर त्याच्याकडे एवढे सेलिब्रिटीज म्हणजे त्याचे टिकटॉकर्स किंवा युट्यूबर्स यायला लागले, त्यामुळे तो बूम जास्त झाला. तेच तुम्ही जसं म्हणता की कंटेंट जेवढं क्रिएट करा तेवढंच. अभी महेश चौहान कोपरगंज स्टेशन के सामने वाला, उसका जो हैंडल करता है ना,
ये इंस्टाग्राम, वो अपना स्टूडेंट है, अच्छा वो चिकन लेग पे पता है, हाँ तो ना मैं टकलू को ते बघतो मैं। तर उसका भी जो इंस्टाग्राम पे हैंडल करता है ना, वो अपना स्टूडेंट है, अजित करके। हाँ हाँ सो द पॉइंट इज दैट उसका हैंडल करता है वो अपना अजित अजित करके। गुड थिंग। सो स्टार्ट इन द कंटेंट गाइस, इसका ये डिस्कशन का अंडरलाइन है कि कंटेंट, ठीक है बस। ओके, so now let's understand about the next things here one by one. So guys, what we are going to do is that we are going to start understanding कि सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक प्रोफाइल, ये बताने की जरूरत नहीं है, आई होप बताने की जरूरत है, सबके पास प्रोफाइल है। सो लेट्स नॉट पुट द टाइम ऑन दैट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली। Suppose this is what my Facebook profile, okay, and now in this particular Facebook profile, if I want to, okay, ये अभी ये दिख रहा है, इसके लिए बता रहा हूँ ये कौन है बेसिकली, ठीक है, ये है योगेश आलेकरी, ठीक है, ही इज आवर स्टूडेंट, ठीक है। अभी ये कहाँ पे था, किधर है अभी ये, तुर्की, हाँ। नाउ ये जो दिख रहा है ये बाइक, ये MH46 है, हाँ, मतलब इधर ये रहता है कोपर करने, यहाँ से बाइक लेके गया वो लंदन बाय रोड, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप इसका देखो, देख रहे हैं 18 नंबर तुर्किश बॉर्डर, ब्लैक सी एंड ऑल, तो यहाँ से बाय रोड वो गया है, उसका वेबसाइट का काम पूरा हमने किया है। सो दैट इज अ पॉइंट। तो अभी ये दिखा है, इसके लिए बता रहा हूँ, एकदम इसका खुद का कंपनी है, रोमिंग ऑन व्हील्स करके, अल्टीमेट ट्रैवल एंड हैकर्स करके, दो कंपनी जिसके ट्रैवलिंग में काम करता है पूरा, ट्रैवल डोमेन। हाँ, स्पॉन्सर भी थोड़ा मिला, थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया इसने, लेकिन अच्छा होता है बहुत, मतलब कि अलग ही लेवल पे खेलता हो यहाँ से भाई कुछ 120 दिन का उसका ट्रैवल है, और पूरा लंदन घूम के आएगा बाइक पे, देखो, ठीक है, तो ऐसी बात है, ठीक है। चलो, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट वी कैन से फेसबुक पेज। If you want to create the Facebook page, guys, you have to go to the pages, and from the pages you will click on the create new page, and once you click on the create new page, you will go here, put the name, then put the category, any kind of name you can put. You have to put the category which is available here only. आप खुद का कैटेगरी नहीं डाल सकते, जो यहाँ पे कैटेगरी अवेलेबल है वही से हमें लेना पड़ेगा। देन वी हैव टू पुट द बायो, देयर इन जस्ट 255 कैरेक्टर्स ओनली, व्हिच इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, and then you can click on the, let me just choose anything, marketing agency, and I can go to this, I can put the bio, and I can create the page. Now I'm not going to create this page right now because I'm already having the page. तो यहाँ पे किसके पास पेज नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपके पास पेज है क्या? बना पेज नहीं है, तू जाएगा, तुझा पेज आया, ओके। नाउ ये 1 2 3 4 लोगों के पास पेज नहीं है, राइट? सो वी हैव टू क्रिएट द पेज। Okay, now जिनके पास पेज है, we have to observe that one thing, that page creation is one process and page completion is other process. That means after creating the page, you have to complete the page as well. Now, what do you mean by the complete? Complete matlab, whenever we are going to create the page, after that page, we have to complete that page with proper information on that. Website, phone number, ईमेल आईडी, जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जितना भी इंफॉर्मेशन हमें पूछ रहा है, एवरीथिंग दैट वी हैव टू कंप्लीट इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट, यू कैन सी, जस्ट लेट मी जस्ट गो टू द अबाउट, एंड अबाउट में जाके जितने भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है फॉर द कंप्लीशन, यू हैव टू fill the information about your business. That is going to ask me about the phone number, email ID, website, social media handle का connection, Wi-Fi name and all. जितने भी important है, सब you have to fill one by one, and that is very important thing to understand. Getting my point? So you have to do all these things here one by one about the completion of the page, right? So privacy and legal info, अगर है तो आपको करना तो कर सकते हैं, वर्क एंड एजुकेशन, प्लेसेस लिव, पेज ट्रांसपेरेंसी, फैमिली रिलेशनशिप्स,
डिटेल्स अबाउट यू, लाईफ इव्हेंट्स अँड सो. खालची टाकायची गरज आहे. नाही, जिथे जिथे तुम्हाला वाटतं ना की इथं मी टाकू शकतो किंवा हे माझ्या बिझनेससाठी रिक्वायर्ड आहे, टाकून द्यायचं. इज नॉट होता की हे टाकायचे की नाही, ते टाकायचे की नाही. तुम्हाला वाटतं ना तिथे हा ते दिसतंय, यू हॅव टू फील, यू हॅव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ॲट दॅट पॉईंट, की हे जर कस्टमरनी बघितलं तर कस्टमरला याच्यातून माहिती मिळेल का, इन्फॉर्मेशन मिळेल का, व्हॅल्यू मिळेल का. जर त्याचा आन्सर हो आहे तर टाकून द्यायचं लगेच. Is that clear? So this is how you are going to complete the page as well. So now what we have to do, we have to create the page for those who don't have the page, and the people who are having the page, you have to go and understand is the page complete or not. If it is not, they have to complete the page. So this is the second task. Task number 3, do you have Instagram handle for your own businesses? आहे तुझ्याकडं No, पर्सनल, no, sir. पर्सनल For आहे, me, no. पर्सनल आहे का? हा, प्रतिभा, do you have the personal Instagram account? No, no, no. I don't have. I don't have. Okay, fine. So you have to create the Instagram account as well, right? So how to create that? Just go to the Instagram. Let me show you if you are not having that. So it's an easy thing again. You just have to click on sign up here. Use your mobile number or email address, full name, username, password, and all. Just click on sign up. It will ask, it will send one OTP, I think, on your mobile phone just to validate that. And you can validate that, and you can just create your LinkedIn profile, sorry, Instagram profile as well. And after creating that, upload your photo, profile picture, you can say, right? And start uploading the things of your own things, right? So this is how, Pratibha, you also can create the your LinkedIn, sorry, Page. Instagram profile. Is that clear? Instagram. So these two things that you have to complete first, and then we'll go ahead with the advertisement. So how we can, or not advertisement directly, but we'll understand how we can read the Facebook and all. So just complete these two things first, and then we'll go for the next options. Okay. So start your things. तुम्ही लॅपटॉप घ्या, लॅपटॉप घेतो आम्ही. सॉरी आमच्या मॅथ्सच्या सरांसारखं डीपली. हा, आणि तू आज मला त्या सांगून गेला की तू मिस नको करू आणि तू उठू पण नको. नाही समजलं तरी बस. ते खूप छान शिकवतात. किती सुंदर. म्हणजे मी हे नवीनला पण सांगितलेलं. त्याला इतकं आवडलं तुमचं लेक्चर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. खूप आवडलं. हो. थँक्यू सो मच. नाही, मी त्याला खूप लवकर जॉईन करणार आहे सुट्ट्यांमध्ये. ही लव्हज अरे इट. वा, म्हणजे क्या बात. हो, किती वय हो. आहे त्याला त्याचं? नाही 12 खूप वर्ष. 12चा आहे सर. आणि त्यांनी त्या दिवशी ना माझ्या आधी सगळं करवलं, मला शिकवलं. मला घेऊन बसला कॅनवामध्ये. अरे वा, क्या बात है. हो, त्याला थोडं आहे त्या गोष्टींचा वेड. मी जरा हॉलिडेजमध्ये मला लावायचा आहे क्लास त्याला. हो, येस. इनिशियली जस्ट परफॉर्मन्स मार्केटिंग जरी शिकला ना तो, तरी पण इनफ आहे त्याला. आणि हां, दिस इज, तेवढंच. and this skill does not require any sort of age, education and nothing ना. काहीच गरज आणि नाही. सर मुलं कार्टून बघतात ना, असं काही शिकला तर तो क्रिएटिव्ह माइंडमध्ये तरी जाईल ना. नवीन त्याचं माइंड असं व्हिज्युअलायझेशन कॅपॅसिटी अजून वाढेल त्याची. सो दॅट द रिझन. ऍक्च्युली आणि त्याने खूप अप्रिशिएट केलं. खूप म्हणजे त्याच्या बाबांनाही सांगितलं की मम्मीचे सर एवढे छान शिकवतात, पण मम्मीच नीट करत होती. मम्मीला सांगितलं नीट करायला आता. खूप आवडलं त्याला ते क्लास. ग्रेट ग्रेट. अरे आप नया प्रोफाइल बना रहे हो क्या? मोबाईल मध्ये नाही का लॉग इन? मग फॉरगेट पासवर्ड कर ना. आपका भी नहीं क्या पासवर्ड? है ना प्रोफाइल? नहीं, अच्छा हाँ, तो मैं पूछा, ठीक है बना लो प्रोफाइल. अभी हाँ, नया प्रोफाइल बना के पहले कंप्लीट करो उसको, और डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते अभी हम, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा आपका. तो बना लो, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. हाँ, बरोबर तुम्ही. ऍक्च्युली मला नेम एडिट करायचं म्हणजे येत नाही.
आधी हे जे पेज होईल होतं ना ते हा. खूप कमी होतं. ते हा. आज मला जास्त दिसतं. हे कम्प्लीट केलंस ना होऊन बाहेर. हा. हे बघ असं अबाउट मध्ये जायचं इथं. हम्म. आणि अबाउट मध्ये जाऊन जेवढं जेवढं तू टाकू शकतोस ना तेवढं सगळं टाकू. हे जे आहे ना कॉन्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन सगळं टाकलेलं आहे. हा गुड. हे बघ हे बरोबर केलंस. प्राइस रेंज, जेंडर, हा मराठी, परफेक्ट आहे. प्रायव्हसी हे काय काय माहिती लिगल लिंक असते ना, म्हणजे आता वेबसाईट बनवण्याच्या नंतरची लिंक आहे ना ती तिथे आपण द्यायची. एम्प्रेशन वर्क एम्प्रेशन बेसिकली वगैरे ट्रान्सपरन्सी वगैरे. हा फॅमिली रिलेशनशिप हे काय टाकायची गरज नाही याच्यामध्ये. कंपनीशिवाय टाकून नेम प्रोनाउन्सिएशन कसं करतो ते काय टाकून. अदर नेम्स काय असतील तर आणि फेवरेट कोड टाकून द्या. असतं ना की तुला हे कोड आवडतं ते टाकून दिलंच तरी चालेल. आणि त्याच्यानंतर आपण थोडं नाव चेंज करायचं ना विथ आलं एडिट मध्ये. मग टॅक्स प्लेट 20 हा चालेल. मग आपण बघूया अंडरस्कोर होतंय का. म्हणजे एक असेल ना तर बरं पडतं ना जरा सोशल मीडिया हँडल घेताना. हा अवेलेबल आहे. मग पासवर्ड टाक तुझा प्रोफाईलचा आणि रिक्वेस्ट चेंज करून टाक होऊन जाईल. म्हणजे कसं दोन्ही ठिकाणी एकच वापरतो. हा हा हे आपल्याला चालू करायचं. हे थोडा वेळ थांब. हे आता हे कम्प्लीट करून घ्या मग आपल्याला पोस्टिंग करून. हा हा येस येस येस. त्याच्यावरतीच आपण जे कीवर्ड टाकू त्याच्यामध्येच आपल्याला रँकिंग दिसतं वर खाली. आपण डिस्क्रिप्शन पेज मध्ये जे लिहिणार हा हा त्याच्यावरती जे रँकिंग येते का पेजची ऑर्गॅनिकली. नाही त्याच्यामध्ये देर आर लॉट ऑफ फॅक्टर्स. अच्छा म्हणजे डिस्क्रिप्शन तर वन ऑफ दोज पण बाकीच्या पण गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. ओके. सो आणि पोस्टिंग मध्ये पण तेच कीवर्ड जर ठेवले आपण जे आपण असं हा हा येस 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 तरी पण कीवर्ड्स आहेत. त्याच्यानंतर तुमच्या कॉन्टेंटची क्वालिटी आहे या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. येस दॅट इज इम्पॉर्टंट. अच्छा दॅट इज ग्रेट. आता ते हे जे आहे ना प्रोफाईल कव्हर फोटो वगैरे ते कम्प्लीट करून घे ना. हा दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग. हा जेवढं काय तुम्हाला करता येईल ना त्याच्यामध्ये तेवढं तुम्ही करून घ्या. काही इश्यू नाही त्याच्यामध्ये. हा तू नवीन बनव ना स्वतःच्या नावाचं बनव. डिजिटल संकेत. हा ते बनव ना. टॅक्सला वेगळ्याने टॅगॉन होत आहे. हा टॅगॉन युनिफॉर्म साठी टॅगला आपल्याला स्वतःच ते मराठीमध्ये वा वा हे तुला मोबाईल मध्ये नसेल.
जरा चेक कर मोबाइल में काम हो सर हाँ आपण बिझनेस करावा आधी आधी रेग्युलर व्हॉट्सअपचा पूर्ण वाटून केली आणि मग तो बिझनेस मध्ये कन्वर्ट करा म्हणजे काय होतं ना जो रेग्युलर बॅकअप आहे ना तो बिझनेस मध्ये त्याच्यात असेल म्हणजे बॅकअप नसेल तर तो येणार नाही त्याच्यानंतर कारण त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट असतील त्यांचे कम्युनिकेशन असतील ते सगळं प्रॉपर बनवणं गरजेचं डायरेक्टली करू नका आणि ते व्यवस्थित बॅकअप घे आणि बॅकअप घेतल्यानंतर मग तो रेग्युलर नंबर व्हॉट्सअप बिझनेसवर शिफ्ट कर असं हाँ हो गया आपका अकाउंट क्रिएट उधर बना कौन था तो उसमें मेरा सस्पेंड हो गया यूज नहीं किया था तो नया बना रहा हूँ लेकिन वही आ रही है तो नाम वही मैसेज दूसरी ईमेल से क्या वो भी वही आ रहा है क्या नहीं नहीं नया अकाउंट बना लो ना हाँ वही उसमें नया बनाने के लिए वही उसमें डालो तो ये रीजन आईडी है ये ईमेल आईडी है और फिर पहले नहीं इसके मेरे चैनल पर बायो मध्ये काय आहे नाही बनाने पासवर्ड है ना तो इसका अपने डालो बायो बायो मध्ये ना in the past. Finally, about your business. What we are in now. ये कंप्लीट करूँगी ना affiliate नहीं किया ये लाभ आपको मतलब हाँ कर दो अरे मान लीजिए बिजनेस पेज मतलब ये पेज में डालना आणि ही जी ती प्रोफाइल राइट याचा एक ऑलरेडी संकेत माने हाँ ये भी प्रोफाइल है हाँ ये जो आए थे ये हाँ ये प्रोफाइल क्रिएट जेल वर्ष एवढे ना या प्रोफाइल मध्ये येत नाही की येतं नाही ते दोन्हीकडे येत होतं दोन्ही आधी तसं नव्हतं आता जे पेज मध्ये येतं ते प्रोफाइल मध्ये मग आणि कसं करणार सर की हे पेज एक प्रोफाइल आहे तिथून समजतं ना आणि मॅनेज प्रोफाइल अच्छा क्या होगा आपका काम करते हैं एक नया ईमेल अकाउंट बनाना और उसके भी एक नया पेज रखना क्योंकि अभी हमें लगेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस तो जस्ट पूरा हेलो हाँ यस मुझे ये पूछना था कि हाँ मैंने किया हुआ है 10-15 साल का एक्सपीरियंस नहीं आवाज आवाज इतनी है हेलो प्रतिभा यू आर नॉट ऑडिबल आई एम सॉरी
हेलो. Hello, Pratibha, are you there? Yes, sir. Yes, I'm there. Yeah, you're not audible actually. You were saying something. No, I didn't say anything. Didn't say. Then who I was? said कि already I'm having account, but अच्छा I'm अच्छा. not so much perfect to handle. एक दो बीच में एक दो रील मैंने ट्राई किए थे, बट उसके बाद मैंने कुछ और ऐसा खास ट्राई नहीं किया था. ठीक है, no issues. So you're having your yeah, what you can say, Insta account as well, na? Yeah, Insta account as well. Great, no issues then. So we will handle it in a proper way so that you'll get to know how to handle Yes, and sir. Yes, yes. हा. नाही, वेबसाईट किंवा कुठली टाकू शकतेस तू, असं काही नाही. फक्त वेबसाईटची गरज नाहीये, तू कुठली लिंक टाकू शकतेस. डन गाइस. अक्षय झाली प्रोफाईल कम्प्लीट.
नाही, वेबसाईट नसेल आता नका टाकू. जेव्हा आपली बनेल ना तेव्हा आपण ती प्रोफाईल अपडेट करूया. डन. परफेक्ट. ग्रेट. बाकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करू. गो टू द अबाउट नाउ. यू आगे go. Register page ये बात है चार लोग की तरफ जैसे ना प्रॉपर पेज में पहले से पोस्ट कर दो ना. अच्छा ये चैट वीडियो का पहले से so what are you doing in all, what kind of services you're providing all, so everything सर्विसेज को देगा वो लग रहा है. हो गया आपका. हाँ वो एक्सेस पेज में देखने को पड़ा ये नया अकाउंट बन गया. हाँ नया था यहाँ पे क्लास कर दो. हाँ तो वेबसाइट है मेरी. हाँ अच्छा ऐसा ओपन करेंगे मैं भी ना मुझे काम किया. अच्छा चलो रीसेट करूँगा. रीसेट गलत चलो. हाँ टाइमिंग चलाना चल नाव नाही चेंज होते कुठलं काय ते आपण जे आता ट्रान्सलेशन नाही अंडरस्कोर घेत नाही. अंडरस्कोरच्या ऐवजी दुसरं काही टाक. नाही असं नाही चाललं ना. हे नाही टाकायचं पूर्ण कॅप्शन ते पूर्ण कॅप्शन काढून टाक. कॅप्शन द्यायचं ती तसं नाही ती कॅप्शन एक स्मॉल टॅग ऑन स्पेस क्रिएशन टी कॅपिटल सी 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 कॅपिटल. आता क्रिएट केस कर. तू लास्ट टाइम केस करी नाव करी चेंज केलंस. हां ऍक्च्युली अकाउंट मी आधी बनवलं होतं. मी बघता अपलोड आता चाललेलं. मी जेव्हा पेज मध्ये गेलो तुम्ही शिकवल्यानंतर त्यावेळेस तिथं माझं अकाउंट होतं. ओके कारण काय होतं माहितीये का की एकदा तू चेंज केलं ना 60 दिवस थांबावं लागतं. मला करायचं मला होतं 8 दिवस डेपोर मध्ये थांबावं लागतं. पुढच्या वेळेला नाव चेंज. ठीक आहे म्हणजे नाव म्हणजे काय. नाव म्हणजे असं नाव ब्रँडचं नाव. एकदा चेंज केलं तर 60 दिवस थांबावं लागतं. नाही दुसऱ्या वेळेला चेंज मला चेंज नाही पण मी सजेस्ट करत माहितीये आत्मा एका आत्मा तर ब्रँड का हा बरं तिकडे जाऊन तुला करावं लागेल.
एडिट करू शकतो ना? हाँ एडिट करता येऊ शकतो, काही इश्यू नाही त्याचा. आज उपस्थित असलेले विविध क्षेत्र आणि सर्व निमंत्रितांचं मी अजित भुरे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाकडून सहर्ष सविनय स्वागत करतो. महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य असून या कसं काय प्रोफाइल Hello guys, everyone. Now listen. So I hope you people have understood how to create the page and profile. आप बैठ के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. So now let me tell you the next points. कि आपको जो आज घर पे जाके क्या करना है मैं भी आपको बताऊंगा. So guys, you have to complete your entire page information. उसके बाद क्या करना है यहाँ पे देखो. So सबसे पहले एक चीज मुझे आपको बतानी है. अच्छा ये मुझे शेयर करना पड़ेगा ना. हाँ दिख रहा है ना गाइस. लिसन, ये है आपका पेज, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? एंड इसको अगर स्विच करेंगे तो इट विल गेट स्विच टू माय एक्चुअल प्रोफाइल. नाउ इफ आई क्लिक ऑन सी ऑल प्रोफाइल तो मेरे पास इतने सारे अलग अलग पेजेस भी अवेलेबल है. तो मैं सी ऑल करूंगा तो ये मेरे पास पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? सो इफ आई क्लिक ऑन दिस it will go to my actual profile. Okay, now whenever I'll go to the profile, let me just click on this and let me just understand this. Okay, so यहाँ पे आपको करना क्या है? So what your actual thing right now that we have to do is that कि आपको यहाँ पे आज जाके you have to click on each and every point here and understand what that is actually. You have to click on the menu. ये घर पे जाके करना है सबको, और मेन्यू में क्लिक करके यहाँ पे वन बाय वन जाके आपको देखना है. पोस्ट सबको पता है जो पोस्टिंग करते हैं. स्टोरी मतलब रील, यू कैन पोस्ट द रील ऑन हियर एज वेल, जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी दिख सकता है. रूम, रूम पता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, जाके देखना है आपको आज, राइट? यू हैव टू गो एंड चेक व्हाट इज फेसबुक रील रूम, सॉरी. So you get to know about that. Note, second
note down something, right? Page, ad, group, event, and marketing listing, right? Then ads manager, professional dashboard, events, friends, groups, newsfeed, favorite pages, gaming video, play games. You can play the games as well on the Facebook, you can do that as well. Videos, तो जैसे YouTube होता है ना, जैसे Facebook का वीडियो है, right? Marketplace, recent ad activity, memories, saved, जो आपने पहले सेव करके रखा है, blood donations, climate service center, crisis responses, fundraisers, messenger kids and all. Guys, you have to go and you have to check all these things one by one, so that you'll come to know कि इसमें available क्या क्या है. Yes, sir. That will be your homework. ठीक है. So मैं आने के बाद इसमें से कुछ भी पूछ सकता हूँ. Right? And that is what we have to explain. Okay. And now why I'm going to ask these questions to you, there is very simple reason for that. That you have to speak a technical language. You have to have the habit of Yes, sir. टेक्निकल समझाने की आदत आपको होनी चाहिए कि यार ये ऐसे होता है वैसे होता है. That's why I'll be asking the questions to you and you as well, okay? New people. So that is what we have to understand. Is that clear? Right. So great. Any questions now? Do you have any questions for the same right now? So tomorrow, for tomorrow's class, our preparation should be like all these menus, whatever they are menu में जो भी है वो Insta और Facebook के लिए हमें technically understand Okay. करना है proper. Yes. Yeah. So that is what you have to do. Right. क्या हो गया? Add. अच्छा ही का हाँ. इनोव्हेशन करा 10 लाखांपर्यंत भांडवल मिळवणार चलता रहता है. Is that हाँ ते पण येतात. So all these accounts and all of politicians, brands and everything that are handling, कितने मुझे पता है 50 एक तो रहेंगे आराम से. Hello. Yeah. Yes. Is that clear? तो मतलब इतने सारे अकाउंट जब हैंडल करता हूँ फॉर द डिफरेंट ब्रांड्स एंड ऑल, सो दैट्स द डील. में 50-60 तो आराम से रहेंगे ना, है ना? 40-50 तो तर यावरती डेली कंटेंट राहतो की नाही डेली कॉन्टेंटची गरज नाही. काही ब्रँड काही ब्रँड्स दे आर देअर फॉर द परफॉर्मन्स मार्केटिंग ओनली, ज्यांचं फक्त परफॉर्मन्स ऍडव्हर्टाइजमेंट करायची. ऑथॉरिटी एक दाखवण्यासाठी कारण विदाउट फेसबुक पेज का एक्सेस आई कैन नॉट रन एडवर्टाइजमेंट्स ना. तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सेस पेज का एक्सेस लेके ही मैं ऐड रन कर पाता हूँ. सो दैट इज द केस. तो यही हम देखेंगे कल से कि हाउ टू रन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल. ठीक है. इज दैट क्लियर गाइस? तो ये फटाफट आज खत्म करो और कल डायरेक्टली आके विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स कि जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 बनाएंगे अबाउट द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स. Is that clear? Yes. Okay. Yes, sir. And Thank you, sir. till tomorrow, I guess will be getting the LMS access as well. मैं आज बता के सारी चीज डाल देता हूँ. हाँ. तो एलिमेंट्स एक्सेस पे हमें रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? Yes. यही रिकॉर्डिंग मैं वहाँ पे डाल के और कल से जो रिकॉर्डिंग होगा उधर ही होगा डायरेक्ट. ठीक है. चलो great. Let's wind up. Thank you, sir. See you in the tomorrow session. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Have a Bye. good day. Have a good day. Bye. Yeah. Bye. Sir, hello, sir. हाँ या प्लीज टेल मी. सर नॉर्मली यूज टू आस्क की ते लोकेशन माझ्याकडे ना पुण्याचे असतात खूप सारे जॉब आणि ते बाय डिफॉल्ट माझ्याकडे खूप येत राहतात. हाँ. त्याच्यामध्ये ते कॉल करून विचारायला पाहिजे की काही जणांना नीड क्रिएट म्हणजे आपल्या बोलण्यातून त्यांना ते आपण किती बेस्ट हे नीड क्रिएट करून तर वर्क फ्रॉम होम फ्रीलान्सिंग वगैरे मिळू शकतं. ओके. हा माझ्याकडे पुण्यात खूप येतं बिकॉज ॲज यू नो दॅट आय एम इनटू द प्लेसमेंट इंडस्ट्री. आणि आता मी एमएनसीचे तर घेतच नाही, फक्त हे छोटे मोठे माझ्याकडे खूप येत राहतात. एमएनसीचा आम्ही फक्त प्रोफेशनल लेवललाच करतो कारण हे असं पास ऑन नाही करू शकत ना, म्हणजे माहित नाही समोर किती रिस्पॉन्स. करेक्ट. तर नहीं ठीक तसे है. तो ऐसे असतात. तो you can just put the things on the group ना. So I'll share the link on the group as well. ये वाला जो अपना मेन है ना, चालेल.
I'll keep on sending you the messages. हा, पण हा. if you want, then I can cross check. But ज्याला जॉब करायचं त्यांनी जर विचारलं तर ते अग्रेसिव्हनेस आणि ती एनर्जी दॅट कॅन बी मॅच मोर इव्हेंच्युअली Yeah, yeah, असं yeah. होतं. I got the Yeah, point. yeah. So this is the thing. Great. MNC वाले कसं ना, they hire like you, consultant, big brand, हा, and हा, they हा. तर ते तसे विचारतात. बट मी आतापर्यंत नव्हतं. आता मी म्हणजे अशात कुणी असेल तर then I can refer it. Definitely, definitely. So you can put Yeah. the thing on the group directly. है ना? Yes, yes, Other yes. people can get benefit of the same. येस 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 नाही मोठ्या मोठ्या एमएनसी म्हणजे माझ्याकडे टॅको मिंडा पूर्ण ग्रुप आहे. टॅको पूर्ण ग्रुप आहे माझ्याकडे, पूर्ण एंटिटी बिझनेस एंटिटी. Okay, great. मोठमोठे ग्रुप आहेत माझ्याकडे. VW आहे, वी वर्क ऑन द VW, पर्सिस्टंट, सिनिक्रॉन, मोठ्या ब्रँड बरोबर काम करतो आपण. Great, great, great. Very Look nice. at it and I'll definitely keep on updated you on the same. Yeah, yeah, for sure, for sure. Yeah, thank you, sir. Thank you. Okay, chalo, bye. Yeah.